यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर हम देखेंगे अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम है उसको हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो पहला जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान, दूसरा देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, चौथा देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, और पांचवा देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन कृषिणोन्नति योजना, छठा देखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड, सातवां देखेंगे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, आठवां देखेंगे बीज ग्राम योजना सीड विलेज प्रोग्राम, नौवां देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 10वां देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 11वां देखेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, उसके बाद 12वां देख स्टक, 13वां देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 14वां है जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और 15वां है जो ई रकम है, 16वां है जो फेम्ड ई किसान मंडी है, 17वां है परंपरागत कृषि विकास योजना, 18वां है पार्टिसिपेटरी ग्रांटी स्कीम, 19वां है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, 20वां है जो जैविक खेती पोर्टल है, 21वां है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 20वां है जो कृषि विज्ञान केंद्र है, 23वां है जो मेरा गांव मेरा गौरव है, 24वां है जो हर मेड पर पेड है, 25वां है जो नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिलेंस एग्रीकल्चर है, नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर है, उसके बाद 27वां है जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 28वां नेशनल बम्बू मिशन है, 29वां है जो नेशनल मिशन ऑन वाइल्ड एडिबल वाइल्ड एंड वाइल्ड फार्म है, 28वां है जो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है, उसके बाद मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री है जिसमें 3 वो होगा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, और उसके बाद 5 वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इतना हम ऑलमोस्ट 35 स्कीम मैं देखने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे एक एक करके इसका ऑब्जेक्टिव, इसका फीचर जो भी है सबको एक एक करके देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ पर वर्ड कुछ है उसका मीनिंग है उसको हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर वर्ड योजना अगर होगा तो इसका मीनिंग है प्लान, दूसरा विकास मीन्स डेवलपमेंट, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी, स्वच्छता मीन्स हेल्थ, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, फसल मीन्स हार्वेस्ट, एंड खेत मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड, एंड किसान मीन्स फार्मर, जल मीन्स वाटर, एंड जन मीन्स पीपल, बीमा मीन्स इंश्योरेंस, कोष मीन्स फंड, एंड धन मीन्स वेल्थ, धम मीन्स अबोर्ड। उसके बाद और है वर्ड इसका मीनिंग, उज्ज्वला मीन्स लाइट, सड़क मीन्स रोड, केंद्र मीन्स सेंटर, मित्रा मीन्स फ्रेंड, बाल शिशु मीन्स चाइल्ड, बेटी लल्डी गर्ल चाइल्ड, नारी एंड महिला नारी वोमेन, युवा यूथ, परंपरागत मत ट्रेडिशनल, औषधि ड्रग मेडिकेशन, क्या है साक्षरता मीन्स लिटरेसी, सहकार मीन्स कोऑपरेशन,
Ikta means unity. Rozgar means employment. Udyami means entrepreneur. Kalyan means welfare. Khanij means mineral. Hunar means skill, talent, and Sugamya means accessible. Parayatan means tourism. Anyatudya means upliftment, and Sarvodya means development of all. And Avans and Manjil means feeling, and Dharohar means a historical value, and Aviskar means invention, research. Protsah means boost, promote, and Bijli means power, electricity, and Mantritva means motherhood, and Ayushman means long life, and Sagar means ocean. तो ये सभी जो के वर्ड था उसको मैंने देखे। अब देखेंगे पहला पॉलिसी प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। जो पहला जो है यहाँ पर वो बता रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये क्या है भाई, कह रहा है इट इज ए सेंटर सेक्टर स्कीम दैट हैज कम ऑपरेशन फ्रॉम 2018। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो ऑपरेशन 2018 से आया है। अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ कितना 6000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑनलाइन होल्डिंग फार्मर फैमिली। अगला क्या पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई द फार्मर फैमिली विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट एज पर द स्कीम गाइडलाइन। उसके बाद फंड विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है the cash transfer is not linked to the line size and hence it become an income supplement to line owing household. However, it has left the lineless tenants out of its scope. There are a various exclusion category of the scheme which include number 1 में all the institutional line holder, and the 2 में farmer family in which one or more of its member belong to the family category, farmer and present holder of the constitutional post, present ministry, state ministry, and MPs and MLAs. Former present mayors and of the municipal corporation and chairperson of the district panchayat, all serving or retired officer, employee of the central state government ministry, office department and its field unit center or state PSC or office autonomous institution under the government as well as regular employee of the local body. All the superannuated retired pensioner whose monthly pension is rupee 10,000 more exclusively multitasking staff class 4 or D group implying all the person who paid income tax in a last assessment year, professional like doctor, engineer, lawyer, charter accountant, architecture registered with the professional body and carrying out professional by the undertaking practice। ते प्रधानमंत्री सम्मान निधि था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मैंने देख लिया हुआ था। अब दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या कह रहा, इसमें कह रहा इट वाज लॉन्चेड फ्रॉम द खरीफ अगेंस्ट द क्रॉप लॉस। इट ऑपरेटेड अंडर द वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम मोटो। इट रिप्लेस 3 ओल्डर इनिशिएटिव। पहला है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरा है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तीसरा है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। आगे करा इट इज ए कंपल्सरी फॉर फार्मर अवेलिंग क्रॉप लोन, notified crop in notified area and voluntary for non loany farmer। उसके बाद है प्रीमियम रेट फार्मर में पे नॉमिनल टू प्रीमियम रेट ऑन द सम इंश्योर फॉर द खरीफ क्रॉप 5% फॉर द रबी एंड 5% फॉर एनुअल एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आगे करा बैलेंस प्रीमियम इज शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द 50/50 basis। Coverage, the insurance cover is limited to a specific crop, food crops, cereals, millets and pulses and oilseed, annual commercial crops and annual horticulture।
उसके बाद लॉसेस कवर में क्या स्कीम प्रोवाइडेड कवरेज फॉर द क्रॉपिंग साइकिल फ्रॉम प्री सोविंग टू पोस्ट हार्वेस्ट एंड मिड season adversity. Non-prevention risks such as the natural fire, storm, hailstorm, cyclone, inundation has also been included as a localized calamity. Post-harvest losses also covered. General exclusion losses arising out of the war and nuclear risk and malicious damage and other preventable risks shall be excluded. Use of remote sensing technology and smartphones and drones for the quick estimation of the crop losses to ensure early settlements of the claim. PM PMFB by insurance have to now spend 0.5% of the total premium collected on the information, education, communication activity. A scheme is now 100% voluntary for all farmers. It also made it convenient for the farmer to report crop loss within 72 hours of the occurrence of the any event. उसके बाद initiative were taken to integrate land record of the state with the PM FBY जनरल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। उसके बाद तीसरा जो स्कीम है, पहला भी मैंने देखे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या करा है भाई, इसमें करा PMKSY was launched during the 2015 and 16 and main objective are expanding the coverage of irrigation and improving the water use efficiency. आगे करा है implementation decentralized manner through the state irrigation plan and district irrigation plan. Micro irrigation is also incentivized through the subsidy to ensure per drop more crop. Micro irrigation fund is set up with an initial corpus of the rupee 5,000 crore under the scheme with an award. An award will extend the loan to a state government the annual target of the about 2 million per hectare during the remaining period of the 14th Finance Commission. उसके बाद और है कंपोनेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है करा एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, सब कंपोनेंट कमांड एरिया डेवलपमेंट, जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सरफेस माइनर इरिगेशन रिपेयर रिनोवेशन एंड द restoration of the water body, groundwater development, watershed development, Ministry of the Rural Development, per dog more crop, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. उसके बाद 1.4 मीन्स प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना अभी मैंने 3 को देखे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, it is a new central sector and pension scheme. Eligibility, it is eligible for only a small and marginal farmer who own less than 2 hectares of the land, while PM Kisan is for all the farmer. उसके बाद अंदर दिस स्कीम में मिनिमम फिक्स मंथली पेंशन ऑफ द रुपी कितना 3,000 is provided on attaining the age of the 16 year. It is a voluntary and contributory pension scheme with an entry of the 18 to 14 year. Contribution, a beneficiary is required to make a monthly contribution of the between rupee 55 to 2,000 to pension fund and depending on the age of the entry into the scheme. Center's government will contribute equally to the beneficiary contribution. The pension fund is managed by the LIC. पेंशन फंड कौन मैनेज करेगा, LIC. उसके बाद फार्मर कैन ऑल्सो अलाउ contribution to be made directly from the benefit drawn from the PM Kisan scheme. Exit, the beneficiary may opt voluntarily to exit the scheme after a minimum period of the 5 years of the regular contribution. On exit, only their contribution shall be returned by the LIC with the certain condition. उसके the spouse is also eligible to get separate pension of the rupee 3,000 per upon making separate contribution on the death of the subscriber during the period of contribution. A spouse shall have the option for of continuing the scheme by paying a regular contribution. If the spouse does not wish to continue, the total contribution will with interest will be paid to a spouse and nominee. And if the farmer die
during the receipt of the pension, the spouse shall be entitled to receive 50% of the pension as family pension, and provided she is not already an SMF beneficiary of the scheme. Exception: the beneficiary should not SMF cover under any other statutory social security scheme such as NPS, Employee State Insurance Corporation scheme, and Employee Fund Organization scheme, and it include exceptional exception under the PM Kisan scheme. They should not have opted for Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, a national pension scheme for the trader and self-employed person administered by the Ministry of Employment. They should not be from category of the beneficiary of higher economic status. ग्रीन रिवोल्यूशन, अब अगला पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन और कृष्णोत्ती योजना। तभी मैंने कौन देखें, चार को देखें, आपका देखें, पहला देखें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एंड दूसरा देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा तीसरा देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, चौथा देखें प्रधानमंत्री मनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, एंड पांचवा है जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन और कृष्णोत्ती योजना है। ग्रीन रिवोल्यूशन और कृष्णोत्ती योजना, इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम दैट हैज बीन implemented since 2016 and 17. 2016-17 by clubbing living scheme mission, and this living scheme are: one is the mission for integrated development of horticulture, दूसरा है national food security mission, तीसरा है national mission for sustainable agriculture, and चौथा है some mission on agriculture extension, and पांचवा है some mission on seed and planting material, and छठा है some mission on agriculture mechanization, and सातवां है some mission on plant protection and plant quarantine, and सातवां है integrated scheme on agriculture economic and statistics, नौवां integrated science and integrated scheme on the agriculture cooperation, दसवां integrated scheme on agriculture marketing, and 11वां national e-governance plan. Green Revolution Krishnoti Yojana, it is an umbrella scheme that has been implemented since 2016 and 17 by the clubbing living scheme and mission. This scheme look to develop the agriculture and allied sector in the holistic and scientific manner to increase the income of the farmer by enhancing production, productivity, and better return on the product. Key objective: betterment of the agriculture, doubling farmers' earning, appropriate agriculture infrastructure, adequate market for sale of the produce, and all these scheme mission were appraised and approval independently as separate scheme mission. उसके बाद अभी अभी हमने 5 को देखे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, एंड ग्रीन रिवोल्यूशन और कृष्णोत्ती योजना. Green Revolution Krishnoti maker, it was launched in 2015 in Rajasthan. Card inform farmer about nutrition status of the soil along with the recommendation on appropriate dosage of the nutrients to improve the soil health, fertility. Aim: judicious use of fertilizer by the farmer. It will contain the status of the soil with respect to the 12 parameter, and it will also indicate fertilizer recommendation and soil amendment required for the farm, and card will be issued once in every 3 years so that nutrition deficiency can be regularly detected. Category and parameter: macronutrition and nitrogen, phosphorus and potassium, and secondary nutrition sulfur, and micronutrition zinc, Fe, iron and copper, and magnesium, and boron. Physical parameter: pH, electrical conductivity, and organic carbon. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, तो 5 को मैंने देखे। 6 पहला देखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, एंड ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. उसके बाद 7वां जो भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है. दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम सिंस 2002.
Paramparagata Kirsi Vikas Yojana is a component of soil health management of the Indian National Mission for Sustainable Agriculture. This mission aims to promote rural farming and the traditional indigenous practice. It mainly emphasizes on the promoting traditional indigenous practice which reduce externally purchase input and भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति exclusion of all synthetic chemical input and promoting on the farm biomass recycling and the time to time working of the soil for aeration periodical soil aeration and under the KB KB KP BPKB 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 means KP BPKP BPKP means भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भारतीय 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 प्राकृतिक कृषि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति दिस सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना सिंस बीपी के पी द बीपी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति The is a component of soil health management of the national mission of the sustainable agriculture. This scheme aims to promote natural farming and traditional indigenous practice. It mainly emphasizes on promoting traditional indigenous practice which reduce externally and purchase input, exclusion of the all synthetic chemical input and promoting on the farm biomass recycling, time to time working of the soil for irrigation, periodical soil aeration under the KP financial assistance of the rupee to 12,200 per hectare for the 3 year is provided for cluster formation, capacity building, and continuous line hand holding by trained person and certification residues analysis. तभी मैंने देखे 7 वो देखी है 7 वो में कौन कौन देखे पहला देखे मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना एंड ग्रीन रिवोल्यूशन क्रिएशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एंड बीपीकेपी बीपी भारतीय प्रकृति भारतीय प्रकृति किसान पद्धति एंड 8वां जो है आपका है वो है आपका बीज ग्राम योजना और सीड विलेज agriculture and farmer welfare is implementing Beej Gram village program since 2014 and 15. Objective to promote, to improve the stock of the farm, save seed for the enhancing crop production and productivity, financial assistance for distribution of the foundation certificate. Seed is available for up to the 1 acre per farmer. These seed are distributed in 50% of the seed cost for the cereal crops and 60% for the pulse and wild seed fodder or green manure crops. The assistance will also be given to the train the farmer on the seed production and seed technology. The rupee 15,000 for a group of the 50 to 150 farmer. Implementing agency State Department of the Agriculture, State Agriculture University KVK, a state seed corporation, national seed corporation, a state farm corporation of India, state certification agency, department of seed certification. Once implementing agency will be identified for the area locality and is to be authorized by the state government.
तभी मैंने देखे बीज बीज ग्राम योजना, सीड विलेज प्रोग्राम, तभी मैंने देखे कितना देखे 8 देखे हैं। तो पहला देखे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दूसरा देखे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा देखे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना एंड ग्रीन रिवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड एंड भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति एंड उसके बाद बीज 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 सीड विलेज प्रोग्राम, बीज ग्राम योजना, बीज ग्राम योजना, बीज ग्राम योजना, सीड विलेज प्रोग्राम। और नौवां है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नौवां में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या कर रहा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 2007 as an umbrella scheme for ensuring holistic development of the agriculture and life sector. It will be incentivize state in enhancing more allocation to agriculture to achieve 4% growth rate. Feature of the कृषि विकास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। Feature of the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, it is a state plan scheme. Eligibility of a state for the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना is contingent upon the state maintaining or increasing the state plan expenditure on the for agriculture and life sector. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना means RKVY. Preparation of the district and state agriculture plan is a mandatory scheme encourage convergence with other programs such as Manrega, and the pattern of the funding is 100% central government grant. It is an incentive scheme, hence allocation are not automatic, and cabinet has approval for the continuation of the RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना remunerative approach for agriculture and life sector rejuvenation, and from 2017 and 19 to 2019 and 20, agri entrepreneurship component of RKVY. Ministry of Agriculture is funding a startup under the innovation and agri entrepreneur component of RKVY. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, these startup are in the various categories such as agro processing, artificial intelligence, digital agriculture, farm mechanization, waste to wealth, dairy and fishery, etc. Following are the component of this scheme: agripreneurship orientation, month duration with the monthly stipends of the rupee 10,000 per month, and mentorship is provided on the financial, technical, and IP issues. Seed stage funding of a RABI incubator funding up to the rupee 25 lakh, 85% grants and 15% contribution from the incubating area, and pre-seed stage funding of the agripreneur funding up to the rupee 5 lakh and 90% grant and 10% contribution from the incubating sub scheme under the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, bringing green revolution to the eastern India. Additional fodder development program, saffron mission, crop diversification program, livestock health and disease control, foot mouth disease and feed wicking, and targeting rice fallow area. तो नो को देख लीजिए, नो कौन दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि की योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बीज ग्राम योजना, सीड विलेज प्रोग्राम, एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब जो है 10वां है हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम देखेंगे। हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट, एक इट इज सेंटर सेक्टर प्रोग्राम that aimed at growing and developing identified horticulture clusters to make them globally competitive. It is implemented by the
National Horticulture Board of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. It will leverage geographical specialization and promote integrated market-led development of the horticulture cluster MOE and FW has identified 55 horticulture cluster of which 22 have been selected for the pilot launch of the program. Program is expected to cover with other initiative of the government such as the Agriculture Infrastructure Fund. तो अभी देखें हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो 10 वो देख लें तो फिर से एक बार वो हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बीज ग्राम योजना, सीड विलेज प्रोग्राम, उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. In 2018, PM ASHA was announced by the government to aid in providing a remunerative return to the farmer for their produce. Three components that are part of the ASHA price support scheme. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM ASHA, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री संरक्षण अभियान. In 2018, PM ASHA was announced by the government to aid in providing remunerative return to the farmers for their produce. Three components that are part of the ASHA price support scheme, price deficiency payment scheme, pilot of the private procurement and stockist scheme, price support scheme under the PS price support scheme, pulses, oil seed, copra, procured by the center nodal agency with the proactive role of the state government. Besides, the scheme will be implemented with the help of Food Corporation of India and the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. The government will procure 25% of the marketable surplus of the farmer for eligible crops. The procurement expenditure and losses due to the procurement will be borne by the central government as per the norms, and central will provide a bank guarantee for the agency to procure from the farmer and price deficiency payment scheme. A scheme has been formulated on the line of the Madhya Pradesh government Bhavantar Bhugtan Yojana. Under the PDSP, the state will provide the difference between the price prevailing in the mandis and the MSP. And all while seed are covered, there will be no physical procurement of the crop. Private procurement stockist scheme on the pilot basis under the PPPS, selected private agency will procure oil seed in the coordination with the government, and the private agency shall procure the commodity at the MSP in notified market during the notified period from the registered farmer in consonance with the PPSS guideline. This procurement will be done with the price in the market fall below the notified MSP, and when you are authorized by the state and UT government, the private player will then be compensated through the service charge up to the maximum of the 15% of the MSP. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India and the NAFED was established in 1958, and it is registered under the Multi-State Cooperative Society Act. Its objective is to promote cooperative marketing of agriculture produce to the benefit the farmer. Food Corporation of India. Food Corporation of India was set up under the Food Corporation Act 1964 with the following objective: effective price support operation for safeguarding the interests of farmer and distribution of the food grain
through the country for the public distribution system, maintaining satisfactory level of the operational and buffer stock of the food grain to ensure national food security। तो अभी मैंने 11 देखी है, 11 पहला देखे, अब क्या देखा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसके बाद एग्री स्टॉक है। एग्री स्टॉक में क्या है, एग्री स्टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ द डिजिटल database and the technological base intervention in agriculture। It is a federation structure, ownership of the data in the state only, access to federate farmer database is the government only, and no private company is involved in the developing the federate farmer database under the program. Under the program, each farmer will have a unique digital identification farmer ID that contains personal detail information about the land they farm as well as production and financial detail. Each ID will be linked to the individual digital national ID Aadhaar. The data to be collected includes personal detail, profile of the land, health, production detail, and financial detail. Department of Agriculture Cooperation Farmer Welfare enter into a MOU with the Microsoft Corporation to create a unified farmer service interface through its cloud service। MOU talk about the database creation from the particular three scheme: PM Kisan, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Soil Health Card, and the PM Fasal Bima Yojana, crop insurance। And in order to create agri stock, the department has finalized the core concept of Indian digital ecosystem of the agriculture, which lead down a framework for the agri stock। एग्री स्टॉक के तो दो वो देखे हैं अभी मैंने, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसके बाद मैंने देखा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और दूसरा जो है जो एग्री स्टॉक, एंड तीसरा जो देखने के लिए जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इट इज ए सेंटर सेक्टर स्कीम approved by the Union Cabinet in 2022. It aims to provide a medium long-term debt financing facility for investment in viable project for post-harvest management infrastructure and community farming asset। Duration of the scheme shall be for 2022 to 2032 financial year। Eligible beneficiary farmer FPO, PSC, and marketing cooperative society SHG, joint liability group, agri entrepreneurship, a startup, and central state agency or the local body। Feature size of the financial facility rupee 1 lakh crore, and credit guarantee for the loan up to the 2 lakh crore। 2 crore interest subvention of the 3% PA limited to ₹2 crore project in the one location through loan amount can be higher, can on lending rate so that benefit of interest subsidy reaches the beneficiary and service to the farmer remain affordable, and one eligible entity put up the project in different location, then all such project will be eligible under the scheme for loan up to the 2 crore। For a private sector entity such as farmer agri entrepreneurship startup, there will be a limit of the maximum of the 25 such project। In agriculture infrastructure fund, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
एग्री स्टॉक एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए अब चौथा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम इज ए पाइन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which network the existing APMC Mandi physical market to create a unified national market for agriculture commodity. It is a virtual market, but it is connected to the Mandi setup back end and promote genius price discovery. Funding of Agri Tech Infrastructure Fund, which is set up through the Small Farmer Agri Business Custodium and Future Library liberal licensing of the trader and commission agents by the state authority, and one license for a trader is the valid across all market in the state. Single point levy on the first wholesale purchase from the farmer. Implementation center sector scheme, billing a state enact suitable provision in their APMC act for the integration with the e-platform. SFAC. SFAC means a small farmer agriculture, a small farmer agriculture custodian will be the lead legacy for the development of the national e-market. New feature following three models, having lunches to improve the effectiveness of the NAM, and negotiable warehouse receipt model to enable a small and marginal farmer to directly treat their WDRA register warehouse and FPO trading model farmer producer organization to uphold their produce from their premises and collection center for the bidding. Logistic model to help in the seamless transportation of the agri produce and promote interstate under the e-NAM by providing online transport facility for distance buyer. तभी मैंने चार को देखे, कौन कौन देखे? प्रधानमंत्री पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण फंड अभियान, एग्री स्टॉक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और उसके बाद जो है अभी ई रकम है, ई रकम क्या कर रहा है? ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ई रकम क्या है? ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी is a digital platform portal enable farmer to sell the agriculture product through the auction across the country. Farmer would get the payment for their product directly into their bank account without any intermediary. Portal is a joint initiative by the state-run auctioneer, MSTC, Center Warehousing Corporation, ARM, CWRC. In June 2022, Cabinet has approval merger of the Center Rail Side Warehouse Company Limited with the Center Warehousing Corporation, and the same is under the implementation. ई रकम तो पांच को देखें, क्या क्या देखें? पहले देखें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एग्री स्टॉक, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके बाद ई रकम। अभी जो देखेंगे अगला देखेंगे नफेद ई किसान मंडी, नफेद ई किसान मंडी। नफेद यहाँ पर हम देख रहे थे अभी भी बहुत बार नफेद पढ़ रहे थे भाई। नफेद कहाँ है भाई? नफेद क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद नफेद ई किसान मंडी, नफेद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
Agriculture marketing, national agriculture marketing, national agriculture cooperative marketing, Federation of India, National Agriculture Cooperative Marketing, Federation of India. NAFED, NAFED ई किसान मंडी, यही करा हम, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. E-Mandi Kisan is electronic trading platform with physical infrastructure. Each proposed location in partnership with the local farmer producer organization to be integrated with the national live label digital marketing platform. The Mandi has both physical and virtual infrastructure, and it is based on the swap and hub model. The physical infrastructure will include digital platform with auctioning facility and pack house, warehouse, cold storage if required. FPO will get funding support through the Agriculture Infrastructure Fund and subsidy available under the various center state government scheme. The NAFED e-Kisan Mandi. NAFED e-Kisan Mandi. NAFED e-Kisan Mandi. तो 6 देख लिए, तो 6 कौन देखे मैंने देखे, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, एग्री स्टॉक, उसके बाद देखें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके बाद देखें ई रकम, उसके बाद देखें नफीद ई किसान मंडी. और देख रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना. क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना. ये कह रहा है इट इज एन elaborated component of the major project National Mission of Sustainable Agriculture implementation. 50 or more farmer will form a cluster having 50-acre line to take up the organic farming under the scheme. In this way, during 3 years, 10,000 cluster will be formed during covering 550 lakh acre area under the organic farming, and there will be no liability on the farmer for expenditure on certification. This will be no liability on the farmer for the expenditure on certification. Every farmer will be provided to the rupee 20,000 per acre in the 3 year for seed to harvesting of crop and to transport produce to the market. There is no liability for the farmer for expenditure on the certification component. The adoption of participatory grantee system certification through cluster approach, adoption of the organic village through the cluster approach. The परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना. तो 7 गो मैंने देख लिया. तो 7 गो कौन देखे हैं. परंपरागत कृषि विकास योजना देखें, नाफेद ई किसान मंडी देखें. उसके बाद आपको देखें ई रकम देखें, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट देखें. उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बाद एग्री स्टॉक, उसके बाद आपका देखें जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. उसके बाद क्या है, participatory grantee scheme certification system in India. At present in India, 2 types of certification system exist, namely National Program for Organic Production System, third party certification, which is governed by the AFEDA, Ministry of Commerce, and mainly focus for export purpose, and PGS India certificate system, which is governed by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, mainly focus for the local domestic market purpose. PGS, it is the process of certifying organic product to ensure that production take place in the accordance with the laid down quality standard. Participatory grantee scheme. उसके बाद it is a quality assurance initiative, operation outside of the framework of the third party certification.
The pillar of PGS in the India is in its participatory approach, in which peer group will appraise the product instead of the third party inspection. In an IFOM's PGS guideline, it is built on the foundation of the trust, social network, and knowledge exchange. Program is implemented mainly through the National Center of the Organic Farming, Ghaziabad, and they are the three categories for which certification will be issued. Large area certification, only large contiguous area complying to the PGS India standard for several years are considered individual group certification for individual farmer. Farmer should make effort to create group and become part of the PGS India group within a 2 year. Local group certification comprises of the minimum 5 member. Regional Council is an agency authorized by the PGS National Advisory Committee to coordination, coordinate, monitor, and approval certification decision of the local group under the PGS India Organic Grantee Program. तभी मैं देखें ये जो देख रहे थे ग्रांटी ग्रांटी पार्टिसिपेटिव ग्रांटी स्कीम पार्टिसिपेटिव ग्रांटी स्कीम तो कितना मैंने देख ली है 8 देख ली है पार्टिसिपेटिव ग्रांटी स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना परंपरागत कृषि विकास योजना उसके बाद नफेद देखें नफेद ई किसान मंडी उसके बाद ई रकम देखें इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखें उसके बाद एग्री देखें उसके बाद आपका देखें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण उसके बाद नुम्मा जो है नुम्मा क्या है भाई नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ये क्या कर रहा है एनपीओ है एनपीओ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एनपीओ एफ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एनपीओएफ इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूवल बाय द 10th 5-year plan. NPOF are promotion of organic farming in the country through the technical capacity building of all the stakeholders. Statutory quality control of the biofertilizer, organic fertilizer under the Fertilizer Control Order 1986 and capacity building for soil health assessment, organic inputs, resource management, technology development through the support to research and market development, capacity building for low-cost certification system known as the Participatory Grant Scheme, implementation by the National Center of Organic Farming at the Ghaziabad and its 6 CISS Capital Investment Subsidy is a sub-scheme under the National Project on the Organic Farming under the CISS. 100% assistance is provided to the state government agency for setting up the mechanized fruits and vegetable market agro-based compost production unit up to a maximum limit of the rupees 1,1900 per lakh, and for individual private agency assistance up to the 33% of the cost limited to the rupee 63 lakh unit as capital investment in the provided. तो क्या देखें नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग का नो को देखे मैंने नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ से देख लेते हैं और स्टार्टिंग से चलते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न आय संरक्षण अभियान उसके बाद क्या है उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका एग्री स्टॉक दूसरा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट उसके बाद है ई रकम ई किसान मंडी उसके बाद है आपका परंपरागत योजना उसके बाद है आपका ग्रांटी पार्टिसिपेटरी ग्रांटी स्कीम उसके बाद है आपका नेशनल प्रोजेक्ट ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके बाद 20वां जो है वो है आपका क्या है जैविक खेती पोर्टल
agency. It is an initiative of Ministry of Agriculture and Department of Agriculture along with the MSTSC e-commerce company. It is a one-stop solution for facilitating organic farmer to sell their organic produce and promoting organic farming and its benefit. It aims to promote organic farming globally, and this portal cater various stakeholders like local group, individual farmer, buyer and input supplier. तो ये क्या था, जैविक खेती पोर्टल. This portal cater various stakeholders like local group, individual farmer, buyer and input supplier. A knowledge repository section includes case study, video, based farming practice and success story, and other material related to the commerce section provided organic product ranging from green pulse and fruits and vegetables. तो अभी हमने जैविक खेती पोर्टल में देखें, जैविक खेती पोर्टल. जैविक खेती पोर्टल, जैविक खेती पोर्टल एक मिनट से जैविक खेती पोर्टल, जैविक खेती पोर्टल. तो बीच देखें, जैविक खेती पोर्टल देखें, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग देखें, पार्टिसिपेटिव ग्रांट स्कीम देखें. नफेरी किसान मंडी देखें, परंपरागत कृषि विकास योजना देखें, ई रकम देखें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर देखें, मार्केट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखें, नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री स्टॉक. उसके बाद आपका एक और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. इतना देखें. आप क्या देखेंगे, एक इसमें देखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का सेंटर in 2007. It is launched to enhance the production of pulses, coals, cereals, and commercial crops, cotton, jute, sugarcane. It would be implemented through the area expansion, productivity enhancement, restoring soil fertility and the productivity, creating employment opportunity, enhancing farm level economy, revamp food security mission. It will now include 8 components. Note: National Food Security Act is different from the mission. An act is administered by the Ministry of Consumer Affairs. National Food Security and National Food Security Mission. Food security, availability, access and utilization, stability, major component of National Food Security Mission. National Food Security Mission rice, National Food Security Mission wheat, National Food Security Mission pulses, National Food Security Mission core cereal, National Food Security Mission nutritious cereal, and National Food Security Mission commercial crop, and National Food Security Mission wild seed and wild palm, and National Food Security Mission seed village program. तो ये है आपका. तो अभी देखें नेशनल फूड सेफ्टी मिशन. दूसरा देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र. दूसरा में क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र. क्या कह रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र आर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर क्रिएटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ द farm support. It is created to serve as a single window mechanism to address the technology need of the farmer and act as a link among the researcher extension functionary like NGOs and farmer.
Farmer support include farm advisory service, including climate resilience technology, training program for NGOs and frontline demonstration and the farm on the farm testing. KVK operated under the administrative control of the State Agriculture University and the Center Institute. The कृषि विज्ञान केंद्र देखें, कृषि विज्ञान केंद्र देखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन देखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र देखें। आप देखेंगे मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव क्या कर रहा है? The scheme envisages scientists to select village and private information to the uh, uh, farmer on the technical and the other related aspect. It includes scientists functioning at the various various center and institution of the Indian Council of Agriculture Research and working with the State Agriculture University. They may function with the help of KVK and Agriculture Technology Management Agency. तो अभी मैंने देखे मेरा गांव मेरा गौरव कृषि विज्ञान केंद्र एंड कृषि विज्ञान केंद्र और क्या देखें कृषि विज्ञान केंद्र देखें, मेरा गांव मेरा गौरव देखें और उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन देखें। हर मीड पर पेड़ देखेंगे आप तो would under some mission of the agroforestry her made per paid aim to encourage tree plantation on the farmland along with the cropping system. There is a provision for financial assistance for nursery development and plantation in the farmland to make farming system more climate resilient adaptive. तो अभी मैंने देखे 4 को देखे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके बाद देखें किसान राष्ट्रीय नहीं केंद्र किसान केंद्र विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र मेरा गांव मेरा गौरव हर मीड पर पेड़। उसके बाद नेशनल इनिशिएटिव क्लाइमेट रिलियंस एग्रीकल्चर है। अगला है नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रिलियंस एग्रीकल्चर, नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर है। नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर है, क्या कह रहा है? नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर इज ए मेगा project of the Indian Council of Agriculture Research that was launched in 2011 aimed to enhance the resilience of Indian agriculture to climate change and climate vulnerability through strategic research and technological demonstration. Research on adaptation and mitigation cover crops, livestock, fishery and natural resource management. 4 components: strategic research, technological demonstration, capacity building and sponsor competitive grant. तो अभी मैंने देखे राष्ट्रीय नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर। तो 5 को देखें, पहला देखें नेशनल मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। दूसरा में है कृषि विज्ञान केंद्र। तीसरा है मेरा गांव मेरा गौरव। चौथा हर मीड पर पेड़। पांचवा है नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर। नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज फॉर नेशनल यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। The National Program on the Use of Space Technology for Agriculture (NPST) is a proposed program which envisages integrated use of space and geospatial tools for mapping, monitoring and management of agriculture. Current running program will be subsumed under this idea: Project Fasal, cropping, crop forecasting, Project Namadans for drought assessment, and Project Chaman for horticulture assessment development, and Project Kishan for crop insurance, crop intensification plan, and 4 sub-programs: sub crop assessment, monitoring, agriculture resource management, disaster monitoring and mitigation, satellite communication and navigation application। तो 6 को देखें मैंने अभी, तो कौन देखें अभी जो क्या देखें, इसका क्या नाम, नेशनल प्रोग्राम ऑन द यूज ऑफ स्पेस फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद देखें नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद देखें हर मीड पर पेड़। उसके बाद मेरा गौरव मेरा गांव मेरा गौरव। उसके बाद देखें आपका
कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद देखें आपका, उसके बाद आपका देखें सिक्योरिटी मिशन। आप जो देख रहे हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल agriculture, national mission for sustainable agriculture, mission for sustainable agriculture is one of the 8 mission under the national action plan on the climate change. Aim, national mission for sustainable agriculture aim to enhance agriculture productivity, especially in the rain-fed area, focusing on the integrated farming, water use efficiency, soil health management, and synergizing resource. NMSA include programmatic intervention like soil health card and Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Mission Organic Value Chain Development for North-Eastern region, and the Rain-Fed Area Development National Bamboo Mission, and then submission on the agroforestry component, Rain-Fed Area Development, submission on the agroforestry and National Bamboo Mission, soil health management and climate change and sustainable agriculture monitoring, modeling and networking. तभी तक मैंने 7 वो देखे। तब पहला देखें वहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। उसके बाद है कृषि विज्ञान केंद्र, मेरा गांव मेरा गौरव, हर मील पर पेड़। उसके बाद है आपका क्या है, उसके बाद आपका नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रिलियंस एग्रीकल्चर। उसके बाद आपका देखें नेशनल एग्रीकल्चर। उसके बाद देखें इनिशिएटिव। उसके बाद नेशनल, उसके बाद आपका है नेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और उसके बाद आपका है क्या है नेशनल बम्बू मिशन, National Bamboo Mission. National Bamboo, it is a sub-scheme of the centrally sponsored mission for integrated development of horticulture and was launched in Etna. Mission will focus on development of bamboo in limited state where it has a special social, commercial, economic advantage, particularly in the northeastern region and the other state. Key element: research and development, plantation agriculture, in fact, development, innovation in intervention, post-harvest storage and treatment facility for bamboo, and establishments of marketing infrastructure. Structure National Bamboo Mission was approved by the Committee on Economic Affairs in 2018, and it is the central sponsor scheme that is being implemented through the state nodal department, which is nominated by the state NUT, the government concerned, and the state bamboo mission shall be set up in each state, headed by the mission director as a nominated by the state government, and selection of the beneficiary and delivery of the assistance are being carried out by the SBM, State Bamboo Development Agency. Bamboo यहाँ पर India has a highest area under the bamboo and is the second richest country after China in the term of the bamboo diversity, and bamboo belonging to the grass family include as a minor forest produce in Madhya Pradesh as maximum bamboo bearing area. उसके बाद और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट इज a centrally sponsored scheme implemented horticulture sector covering vegetable, root and topper रत्ना, spice, flower, novelty रत्ना, coconut रत्ना, नेशनल मिशन ऑन द edible oil and oil palm। उसके बाद क्या है नेशनल मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो इसको सबको देख लेता हूँ, दोनों को जल्दी जल्दी देखते हैं। तो यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन implemented by the state horticulture mission in all the state and UT except state in NE and the Himalaya region, and horticulture mission for the northeast and Himalaya state, all the state in northeast Himalaya region, Himachal Pradesh. Now national mission bamboo mission and national horticulture board, coconut development board, and central institution for horticulture, national mission on edible oil and oil palm. The NBEF oil is a centrally sponsored scheme that will help in reducing the heavy dependence on import of edible oil and increasing domestic production of edible oil at the 3 times lakh atna productivity of oil palm, increasing additional area of atna hectare oil palm tile atna, and thus reaching the target of the atna, increasing the income of the farmer, and the NMEPEOP has a special focus on the northeast region and the Andaman and Nicobar. A strategic implementation and increasing
seedling and the improving productivity of AFB, encouraging deep irrigation coverage under the wild palm, diversification of area from the low-yielding cereal crop in the wild intake, intercropping duration, gestation period for a state department of agriculture, state department of horticulture, central university, ICR institution and CDC, SAO, KVK, and Kirsi Vigyan Kendra and Central Agency Cooperation, Wild Palm Process Association, DD Kisan, AIR, DD TV channel will be the implementing stakeholder of the National Beekeeping and Honey Mission. ये क्या कर रहा है भाई? National Beekeeping Honey Sector Scheme that aim to for overall promotion development of scientific beekeeping to achieve the goal of the sweet revolution, which is through the National Bee Board. Objective to promote holistic growth of beekeeping industry for the income employment generation to the farm and farm and to enhance agriculture, horticulture production, developing infrastructure facility, including setting up the integrated beekeeping development center, honey testing, sub scheme, mini mission one, mission no, तो क्या है आपका ये नेशनल उसके बाद आपका नेशनल नेशनल तो नेशनल 6 को 1 2 3 4 5 और 6